till the time light went, it was everything very normal. But uske baad, hey guys, welcome back to the channel. So in this vlog, I'm doing a 2-day family trip to Nashik, and this is not the first time I'm visiting Nashik actually. I've been to Nashik before also, but that was my anniversary trip. So in this vlog, I'm going to show you different kind of stay option that you can have in Nashik, the different places you can visit, and the different kind of budgets you can have when you're traveling. So we are heading to our car now. So I'm doing this trip with my mom, dad. So let's say hi to them. Hi. Hello. That's our cottage, the yellow cute one. Let's go inside. So that's the exterior of the cottage, and there is a cute sitting area with lots of different trees around. Going inside, there's a double bed on the left, a sofa cum bed on the right, and another sofa over there. There's a small garden kind of thing outside in the backyard which is visible from here. I frankly found the interiors really cute and cozy. Now let's check out the bathroom. Wow, I think it's really well maintained, I must say. Also, these are some fresh jamuns that we got from the outside tree. Also, there is a hammock outside. तो हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट देखने. मॉम डैड भी मेरे साथ हैं. तो मौसम तो एक्चुअली फुल बारिश वाला हो रहा है एंड सन तो हमें दिख नहीं रहा है, सो वी डोंट नो व्हाट व्यू विल गेट एंड दिस इज मोस्टली अक्रॉस द डैम ओनली, सो लेट्स सी हाउ इट इज. So this is the sunset point in Nashik. As you can see, road is not that good, so make sure you wear sport shoes and come, and not like me, I'm wearing sandals. But the view looks amazing from here. ये जो पूरा एरिया है पीछे, यहाँ पे आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा सनसेट दिखता होगा. बट बिकॉज इट्स मानसून वी आर नॉट सीइंग सन राइट नाउ, बट इतना ब्यूटिफुल व्यू है यहाँ से. दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द डैम विच इज़ द गंगोत्री डैम, सो यू कैन कवर बोथ द पॉइंट्स टुगेदर. ऑल्सो माई सजेशन इज़ दैट यू कम टू नाशिक ड्यूरिंग मानसून ओनली, क्योंकि मैंने जैसे बताया था मैं नाशिक पहले भी आ चुकी हूँ, विच इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च. But I'll tell you, in the month of March it's not that beautiful, so make sure you come during monsoon because look at the clouds. So ये जो हिल है ये एक्चुअली जैसे आप आगे जाते जाएंगे ये और दूर होता जाएगा रोड से, सो मेक श्योर कि आप बहुत आगे ना जाएं, अदरवाइज़ आपको बहुत चलना पड़ेगा. Now I'll go ahead and climb this hill with my heels. It's evening time now and हम लोग डिनर के लिए निकल गए हैं. Let's go, it's raining. So the day one of our trip has almost come to an end. हम लोग नाशिक पहुँचे around 12-12:30. उसके बाद हम लोगों ने लंच किया. We ordered from this place called North Indian something, but really decent food. हम लोग evening में we went to this place called Sunset Point. Literally that's what it's called.
and a beautiful sunset point if you're coming on a non-monsoon day as well. Then we went out for dinner. प्लान था साधना विलेज जाने का क्योंकि मुझे वहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आई थी अपनी एनिवर्सरी पे आई रियली लव्ड हैविंग दिस ह्यूज पापड़. या आई एम अ पापड़ फैनेटिक एंड आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट मुझे पापड़ से प्यार है. आई वॉन्टेड टू हैव दैट बट द प्लेस गॉट क्लोज्ड एट 4 o'clock आई थिंक, सो वील ग्रैब दैट टुमारो. But we thought of having dinner somewhere outside only, so we went to this place called Grill and Chill, which is a little ahead of Sadhana village. Till the time light went, it was everything very normal. But uske baad suddenly the restaurant went from a 4 rating to a 2 rating in my eye because khana thanda tha. They didn't have an inverter backup. Some of the food that we ordered, they didn't tell us that it's going to be super spicy. Hygiene wise, I didn't find the place good at all. So I won't recommend going to this place even though it might look very attractive from outside. Also नासिक में monsoons में काफ़ी time light जाती है. So make sure the property where you stay in has an inverter backup. Right now the whole area का light गया हुआ है but हमारी property में as you can see it's quite well lit. So make sure wherever you're staying there is an inverter backup available. So do check that. Tomorrow is a very long day plan. Morning में हम लोग उठ के जाने वाले हैं to some beautiful sunrise point. After that we'll go to Sula Vineyards where we'll spend half of our day and we will eat lunch most probably at Sadhana village. I'm gonna go to that restaurant just to have papad. But otherwise also it has very good decor. It has something called fire pan and very good missile, so very good place for breakfast as well as for lunch. So yeah, let's hope tomorrow is as exciting as I planned it. And yes, really tired, so want to end the day now. Good night, see you tomorrow. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe? Good morning everyone, and like I said yesterday, things really don't go as planned and we came to know in the morning that light रात में वापस आ गई थी, but because they have newly set up this place, the inverter was running which got shut in the night. We didn't realize it until morning because the weather has been quite pleasant. We're just waiting for the owner to come and fix it and then we'll get ready and head to the different points we had to cover today. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over. So we've come to this another point which is the Someshwar waterfall and यहाँ पे आप देख सकते हो मॉनसून में कितना अमेजिंग व्यू दिख रहा है. यहाँ का जो पानी है वो डैम से आता है एंड डैम इज़ नॉट ओपन राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा वाटरफॉल नहीं है एक्चुअली, बट थोड़ा सा वाटरफॉल वहाँ दिख रहा है. बट अदरवाइज इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू सिट एंड चिल एंड हैव अ ब्यूटिफुल इवनिंग. ऑल्सो नासिक थिंग्स आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, तो आपके पास अगर 4-5 घंटे हैं तो आप काफ़ी पॉइंट्स कवर कर सकते हैं 4-5 घंटे में. दिस स्पॉट इज़ ओनली 17 minutes फ्रॉम वेयर वी आर स्टेइंग. So yes, there's a lot that you can cover, and if you come in the monsoon, you get an amazing view as well. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. और मम्मा बताओ कैसा लग रहा है छुट्टी पे आके? बहुत बढ़िया रहा है, सब आते रहो, बार बार आते रहो. प्रॉपर्टी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. यहाँ हमारा रूम है वही बहुत बढ़िया है. एक क्या कहते हैं उसको, कुटिया. हाँ, वाइन टेस्टिंग करोगे अभी? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. So while returning from the Somnath waterfall, we saw that Sadhana village अभी खुला है and यहाँ का मिसल पाव बहुत popular है. So instead of having lunch, we've decided to have मिसल पाव over here for breakfast and अभी बिल्कुल भी crowd नहीं है. You can see in the background पूरा
restaurant खुला है and we're the only one over here. Can't wait to have the misal pav inside. And मैंने इनसे वो पापड़ के बारे में पूछा जो मैंने last time खाया था and apparently they have stopped it. So anyways, so let's go and have some misal now. तो हम लोग खा रहे हैं मिसल पाव एंड उसके साथ खिचिया पापड़ भी आया है विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द रुमाली पापड़ दैट आई हैड बट आई थिंक इट कॉम्पनसेट्स फॉर इट. आप आपने टेस्ट किया? या बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. बहुत अच्छा टेस्ट है. दही के साथ देने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा मेरे को. अच्छा, दही के साथ मिसल पाव आया है. लेट्स ट्राई. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. So we finished having misal pav and now we are trying a popular dish over here which is this gud ka jalebi. It looks yum. इसको कहते हैं गुड़ की जलेबी. खाओ, ऐश करो. बहुत बढ़िया है, मैंने पहली बार खाई है और बहुत अच्छी लग रही है. So we've reached the Sula vineyard and look at this. It is so green. ऐसा लग रहा है जैसे saturation filter लगाया हुआ है. It is so pretty. Let's go inside now. Let's go get our tickets now. So behind me is the entry to Sula Vineyard. The ticket price is 600 rupees जो आप अंदर redeem कर सकते हो वाइन टूर के लिए एंड टेस्टिंग के लिए भी. अगर आपको वो दोनों नहीं करने हैं तो आप उसको डाइन इन के लिए भी यूज़ कर सकते हो. It is so different to come to Sula Vineyards during monsoons because during summer it's really sunny. Mom, Dad are clicking pictures over there. You can actually come and stay at Sula Vineyards. The per night price is a little expensive, but I think they might be giving free tour of the vineyards. I've also been seeing this cycling culture in Nashik, and I think it's so amazing. We tasted 7 different type of wines, clicked a lot of pictures, and got a little tipsy also. अभी हम जा रहे हैं सनसेट देखने बैक वाटर्स पे एंड दिस इज ओनली 5 minutes वॉकिंग फ्रॉम वेयर वी आर स्टेइंग. सो लेट्स गो क्विकली बिफोर द सनसेट्स. So pretty. इस व्लॉग के सेकंड पार्ट में हम 2 अलग अलग आइटिनरीज देखेंगे एंड अगर आप नासिक जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो वाला वीडियो मिस मत करना. ऑन द वे टू बैकयार्ड ये अंकल और उनकी टपरी आपको लेफ्ट में दिखेगी. ये बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं. ऐसे मौसम में ब्रेड पकौड़ा एंड चाय इज यम. So guys, I hope you liked the vlog. If you did, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.